Hi students, welcome to FFES English Hub channel. This video is about the stories of all time. In this video, we're gonna solve the second part of the second chapter named as the Island Adventure. First of all, we will solve the vocabulary words. Replace the following underlined words with their synonyms. We are given with the underlined words, like you can see that spotted, whale, dangerous, whale, tick, ferocious, dangerous, encounter and tools. We have to replace these words with synonyms. First of all, we will replace spotted with the sighted or observed. Okay. Next, we will replace wild with fierce. And in the second, dangerous will replace with terrifying or perilous. Next, wild will replace with the fierce. Thick will replace with dense, and ferocious will replace with terrifying or brutal. Dangerous will replace with terrifying. Encounter will replace with the face, and tools will replace with devices. Okay. Urdu meanings are also given to understand the concept of the words. Next, our exercise or activity is about comprehension checkpoint. First question is organize and write the sequence of the story with the help of pictures given below. Write first, second, third, fourth and fifth. इस क्वेश्चन में हमें जो है वो पिक्चर्स दी गई हैं, आप बुक पे देख सकते हैं. हम लोगों ने जो है वो सीक्वेंस जो है वो उन पे लिखनी है. फर्स्ट पिक्चर is at number 11, second is on 4, third is on 6, fourth is on 10th number, and last one is 8th respectively. Okay, पहली तस्वीर नंबर 11 पे, दूसरी 4 नंबर पे, तीसरी 6, फोर्थ वाली जो है 10 और लास्ट वाली 8 नंबर पे जो है वो लाई करती है. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वर द थ्री बॉयज डूइंग इन द फॉरेस्ट. तीनों लड़के जंगल में क्या कर रहे थे. दे वर गोइंग फॉर फिशिंग इन द फॉरेस्ट. वो जंगल में मछलियाँ पकड़ने के लिए जा रहे थे. हाउ डिड द बॉयज गेट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट. कैसे लड़के जो है वो जंगल में खो गए. दे गॉट लॉस्ट बिकॉज दे लॉस्ट देयर मैप. वो खो गए क्योंकि उन्होंने अपना जो है वो नक्शा खो दिया. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैप. नक्शे की क्या जो है वो अहमियत है. मैप शोज द डायरेक्शन ऑफ एनी प्लेस. मैप जो है वो हमें क्या करता है, किसी भी जगह की डायरेक्शन जो है वो समत बताता है. हु हैड स्टोलन द मैप. मैप किसने चुराया था. उसामा हैड स्टोलन द मैप. उसामा ने नक्शा चुराया था. If you are Osama, what would you do in order to avoid getting lost in the forest? अगर आप उसामा होते तो आप जंगल में खोने से बचने के लिए क्या करते. If I were Osama, I would not have stolen the map. अगर मैं जो है उसामा होता तो मैं नक्शे को, मैप को चोरी ना करता. If you were Hamza, what would you do to avoid the conflict with Osama? अगर आप हमजा होते तो आप हमजा के साथ लड़ाई से बचने के लिए क्या करते. If I were Hamza, I would have asked the soldier to help us. अगर मैं हमजा होता तो मैं सिपाही को कहता कि हमारी मदद करें. What is the moral of the story? The moral of the story is how to behave in the world. Okay, sorry, here is mistake in the spelling. We will add L. Okay, WORLD word. अगर मैं जो है इस स्टोरी का मॉरल ये है, कि सब ये है कि हमें जो है दुनिया में कैसा बर्ताव करना चाहिए. Next activity is use of language. Here we are given with the definition or concept of sentence. What is sentence? A group of words that makes a complete sentence. ऐसा जो है वो अल्फाज का मजमूआ जो क्या करता है, एक मुकम्मल सेंस जो है वो समझ बोल देता है. It consists of subject and predicate. Okay, these two things are necessary to complete a sentence. Like we is subject and play is predicate. Okay, same as Ali is subject and killed a snake is predicate. Next we will talk about the types of the sentences. We are given with the 4 types of the sentences, that is declarative, interrogative, imperative and exclamatory sentences. What are declarative sentences?
डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मेक्स अ स्टेटमेंट और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ये क्या करते हैं, किसी भी जो है वो इंफॉर्मेशन के बारे में हमें जो है वो बताते हैं। फॉर एग्जांपल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, दे लव पिज़्ज़ा, शी इज़ गुड डांसर। हम किसी भी चीज़ के बारे में जब बता रहे हैं तो वो क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन। ओके, क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाता है इंफॉर्मेशन हासिल करने के। फॉर एग्जांपल, डू यू स्पीक इंग्लिश, व्हाई इज द स्काई ब्लू, कैन यू स्विम। यू कैन सी दैट इन ऑल दीज एग्जांपल्स क्वेश्चन इज आस्क्ड। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। इम्पेरेटिव गिव्स अ कमांड, इंस्ट्रक्शन और रिक्वेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, किसी को ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है। फॉर एग्जांपल, sit down please, open the window, listen carefully. You can see that all these examples are talking about command, instruction or request. Next, exclamatory sentence express a strong emotion or surprise. इसमें जब हम लोग अपने emotions जो है वो उनको जो है वो ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, what a great idea, I'm so happy, that's unbelievable. Declarative sentence ends with a full stop, and interrogative sentence ends with a question mark, and imperative sentence also ends with a full stop, and exclamatory sentence ends with the sign of exclamation. Okay, now you can see that at the end of every sentence. Next, our activity is about complete the sentences by putting proper punctuation marks at the end of each sentence. हम लोगों ने इन sentences के आगे जो proper जो punctuation mark लगाना है, and we also have to tell the type of sentence, और हमें जो है वो इस sentence की type के बारे में बताना। I cannot believe that you have stolen the map. I use the correct punctuation mark here. Here we will use a sign of exclamation, and it is a exclamatory sentence because we use the sign of exclamation. And listen to me, here we will use full stop, and it is imperative sentence. In the end, the man managed to resolve the dispute and made everyone happy. We use full stop, and it is declarative sentence. Next, are you hurt? क्या आप वो जख्मी हैं? It is interrogative sentence because we use question mark. Have you stolen my map? क्या आपने मेरा जो map नक्शा चुराया? It is interrogative. Ismail noticed Usama's reaction and asked what's happening to him. It is interrogative, and we will use question mark. Next is you almost got us killed. It is exclamatory sentence, and we will use sign of exclamation. Why did you do that? Here question is asked, so we'll use question mark. How can you do that? तुम ये कैसे कर? It is about a question and interrogative type. Hamza told the man about their journey and thanked him for saving them. It is declarative, and we will use a full stop. On next activity is writing. Prepare a dialogue story. Make sure to use the correct grammar and punctuation. हम लोगों ने जो एक डायलॉग जो है वो लिखना है, उसमें जो करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स और ग्रामर का इस्तेमाल करना है। द नेम ऑफ द डायलॉग इज द मिसिंग बुक। द करेक्टर्स आर सायरा एंड अली। सायरा इज अ स्टूडेंट एंड अली इज सारा's classmate. Scene, where is it happening? In a school library. From here we will start our dialogue. First, Saira says, "Oh no, I can't find my history book. I need it for the exam tomorrow." ओह, मुझे जो है वो अपनी हिस्ट्री की बुक नहीं मिल रही, मुझे जो है वो अपने कल एग्ज़ाम के लिए इसकी ज़रूरत है। अली से, डिड यू चेक अंडर द टेबल? क्या तुमने टेबल के नीचे देखा? सारा, यस आई ऑलरेडी लुक देयर, नथिंग। मैंने जो है वो पहले ही वहाँ पे देख लिया लेकिन कुछ नहीं मिला। अली, मे बी यू लेंट इट टू समवन। अली कहता है क्या हो सकता है तुमने किसी को दी हो। सारा, नो आई डिडंट, वेट आई रिमेंबर्ड, आई पुट इट इन माई लॉकर दिस मॉर्निंग। सारा से, नहीं, और रुको, मुझे याद आया कि मैंने तो इससे जो है सुबह अपने लॉकर में रखा था। अली, गुड, गो चेक योर लॉकर देन। अच्छा, तो चलो अपना जो लॉकर जो है चेक करो। सारा, थैंक्स अली, यू ऑलवेज हेल्प मी थिंक क्लियरली। अली, तुम्हारा शुक्रिया, तुम मुझे हमेशा जो हो अच्छे तरीके से सोचने में मदद करती हो। अली, नो प्रॉब्लम, गुड लक। दिस इज आवर डायलॉग।
You have to complete it on your notebook and book as well as. Next, our activity is prepare a story map of your favorite story using all kinds of sentences. हमें जो है वो स्टोरी जो है वो बनानी है एक, और उसमें all kind of sentences का इस्तेमाल करना है. For your convenient, I write the story of the hare and the tortoise. First, a proud hare mocked a slow tortoise. He challenged the tortoise to race. You are too slow, he boasted. Okay. कहता कि हमारे पास एक जो हेयर खरगोश है उसने जो है वो मजाक उड़ाया एक कछुए का जो कि स्लो चलता था. उसने जो है कछुए को रेस के लिए चैलेंज किया और कहा तुम जो है बहुत स्लो हो. उसने जो उसको चढ़ाना शुरू कर दिया. नेक्स्ट, द tortoise accepted. The race began. The hare ran far ahead and decided to take a nap under a tree. tortoise ने जो उसकी रेस जो चैलेंज कबूल कर लिया. रेस शुरू हुई और हेयर जो है वो दूर जो है वो बहुत जल्दी जो है चला गया और उसने जो है वो एक थोड़ी सी नींद लेने का जो है वो एक दरख्त के नीचे फैसला किया. Then whatever. The tortoise, walking slowly but steadily, continued without stopping. He was determined to finish. कहते tortoise जो कि आस्ता आस्ता जो है वो चलता रहा लेकिन कंटिन्यू उसने रखा बगैर रुके. तो वो डजन था कि वो फिनिश अपनी जो रेस को कर लेगा. लास्ट, the hare woke up to see the tortoise near the finish line. He ran but it was too late. The tortoise had won. खरगोश जो है वो उठता है देखने के लिए कि फिनिश लाइन पे जो tortoise अभी करीब ही होगा, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो tortoise जो है वो रेस जीत चुका था. Moral: slow and steady wins the race. You have to complete this on your book. Our next activity is about reading. Here we are given with two pictures, picture A and picture B. We have to give the answer of the following question. First question is identify what is happening in the pictures. In picture A, a quality event is happening, and in picture B, grandmother is telling a story. You can say that. Next question is how is the audience seated. Audience जो है वो कैसे बैठी हुई है. In a picture A, the audience is seated on the sofa. Picture A में जो है audience sofa के ऊपर बैठी हुई है. And in picture B, they are seated on the grass. Picture B में जो है वो audience घास के ऊपर बैठी हुई है. Next, we are given with the long lost art of the storytelling. First of all, I do extra work and here some important lines you can highlight on your book. These lines are about objectives, like every bold word is telling about an objective, like storytelling is universal and is an ancient as humankind. It may come as a objective question in the paper, so you have to underline these lines on your book. Okay, ये जो जितनी lines जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक दी गई हैं ये एज ऑब्जेक्टिव के तौर पे important lines हैं. आप लोग ने जो है वो इसे अपनी बुक पे अंडरलाइन कर लेना और इनको लाजमी लर्न करना है. Next, vocabulary. Use the words in the box and complete the sentence with correct connectives. The sentences are all from famous traditional tales. First of all, we will talk about what are the connectives. पहले हम बात करेंगे connectives होते क्या हैं. तो we will talk about there. You can see that connectives are words that joins words, phrases और sentences. connectives ऐसे जो है वो words होते हैं जो कि क्या करते हैं किसी भी words को, phrase को या sentence को जो है वो जोड़ते हैं. They help create a smooth flow and show relationship between ideas. वो एक smooth flow बनाते हैं किसी भी statement का, story का और ideas को एक अच्छा relationship बनाते हैं. Examples, for example, and is a connective. For example, Goldilocks saw 3 chairs and 3 balls. Now you can see that and is connecting 3 chairs and the balls. आप लोग देख सकते हैं कि and जो है वो 3 chair and 3 balls को जो है connect कर रहा है. Join two similar ideas. Same as but. She was tired but she could not sleep. Here but is joining two sentences. Okay, you can see that here it is
joining two sentences and showing a contrast, और ये जो है वो contrast मुतज़ाद जो है वो शो करवा रहा है. Because she cried because the chair broke. Here because is again joining two sentences and because is used to show reason. Because जो है वो क्या कर रहा है, दो sentences को जोड़ा और ये वजह बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं. When she woke up the beards were gone. Here when is telling about time. Okay, so the porridge was hot, so he waited. So she waited. Here so is again joining two sentences and show a result, और ये result को बता रहा है. तो connectives क्या होते हैं? Connectives हमारे पास joins two words, phrases or sentences. Connectives जो है दो words, phrases या sentence को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं. Now we will fill in the blanks by using good connectives from the reading. Goldilocks liked to eat porridge, but it was in the first fill in the blanks we will fill it with but. Snow White lost her 7 dwarfs, so she went looking for them. Next, Little Red Riding Hood skipped through the forest when she went to see her grandmother. Jack limped up his beanstalk to reach the top. Peter Pan ran away from Captain Hook when he was coming to get him. The gingerbread man cried if someone was mean to him. The Cinderella felt sad until the fairy helped her go to the ball. The three bears felt scared when they saw their house in a mess. These are the correct use of the connectives. You can fill in the blank. Next, our activity is about the jumble word. The words given below are jumbled up. Rearrange them, then use dictionary to find and write the meanings of the given words. You can take help from the text. हमें जो words दिए गए हैं, like you can see jumble of words. हम लोगों ने जो उसे rearrange करना है और उसके बाद हम लोगों ने synonyms लिखने हैं. I write the Urdu meanings for your convenient as an extra work. ये मैंने जो extra जो इजाफी तौर पे जो लिखे ताकि आपको समझ आ जाए. First word will be rearranged into universal, and meaning of universal is Alamgir. Its synonym is global or widespread. Next is ancient, and old or historic. You have to write only one word. आप लोगों ने सिर्फ एक word लिखना है. Next, culture, way of life or customs. Traditions, again custom or heritage. Next, values, principles or morals. Classics, masterpiece or exemplar. Narrator, storyteller or speaker. Nurture, foster or develop. Entertain, amuse or delight. Last one is promulgate, proclaim or spread. Okay, promulgate mean तबलीग करना, फैलाना, शाया करना. Okay, next, fill in the blanks with your rearranged words. अब हम लोगों ने जो ये वर्ड्स रीअरेंज किए हैं, ये वाले हम लोगों ने इनका इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट करनी है. स्टोरी टेलिंग इज यूनिवर्सल एंड एंशिएंट. I have completed here, fill the blanks. It occurs in every culture. Okay, stories teaches us traditions. Next, stories exist to entertain and promulgate cultural values. Last one is next one is some stories have lasted hundreds of years and are known as stories of all times or classics. African storytellers are narrators of oral traditions. Storytelling nurtures the connections with people in real life. Our next activity is comprehension question. Now answer these questions. हमें जो कुछ questions दिए गए हैं, हम लोगों ने इनका आंसर करना है. Why are people drawn to the stories? क्यों जो है वो people जो है वो drawn जो है वो participate करते थे जब भी stories में जो है वो होती थी. बराबर जो है वो शरीक होते हैं. Drawn means बराबर. People are drawn to stories because they connect them to others and teach them about life, history and values. The people जो है लोग stories में जो है वो बराबर शरीक होते थे क्योंकि वो उन्हें जो है वो
उनकी हिस्ट्री और वैल्यूज़ और लाइफ्स के बारे में बताते थे और वो दूसरों के साथ जो है वो अटैच होते थे। वाई इज़ द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग नोन एज द लॉन्ग लॉस्ट आर्ट? मतलब कि जो स्टोरी टेलिंग का फ़न है वो क्यों जो है वो लॉन्ग लॉस्ट आर्ट जो बन चुका है, क्योंकि काफ़ी अर्सा पहले उसका हो चुका है। इट इज़ कॉल्ड लॉन्ग लॉस्ट बिकॉज इट बिकेम लेस कॉमन, क्योंकि अब ये जो है वो बहुत कम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए जो है वो ये लॉन्ग लॉस्ट जो है वो इसे कहा जाता है। Storytelling has its root in the almost every culture. Can you identify their names in different cultures? कहता है कि स्टोरी टेलिंग जो है वो उसकी शाखें ऑलमोस्ट हर जो है वो कल्चर में फैली हुई हैं। क्या आप जो है वो उनके नेम्स जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस, इन इंडो पाकिस्तान इट्स दास्तान गो। इंडो पाकिस्तान में, इंडिया और पाकिस्तान में इसे दास्तान गो कहा जाता है। एंड इन अफ्रीका स्टोरी टेलर्स आर ग्रियोट्स, इन्हें जो ग्रियोट्स जो है वो कहा जाता है। Next question is social media has taken us far from these oral traditions. The world now feels we need to revive this long lost art. Why do you think this need arose? मतलब सोशल मीडिया ने हमें जो है वो अपने ओल्ड ट्रेडिशन से, पुरानी तहजीब से जो है वो काफ़ी दूर ले चुकी है, लेकिन दुनिया अब ये महसूस करती है कि हमें अपने लॉन्ग लास्ट आर्ट को दोबारा वापस लाना चाहिए। वाई डू यू थिंक दिस नीड अरोज? आप क्यों समझते कि ये इसकी क्यों जरूरत आन पहुंची? This need arose because social media might have reduced face-to-face storytelling. इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हो सकता है कि सोशल मीडिया की वजह से आमने सामने जो स्टोरी टेलिंग का फन है, जो मुलाकात थी, उससे जो कम हो चुके हैं। मेकिंग पीपल मिस दीज डीपर कनेक्शंस, जिससे क्या हुआ, लोगों के एक दूसरे के साथ कनेक्शन कम हो चुके हैं। Next, African storytellers are given high official posts in the government and they have a special place in society. Why, in your opinion, are they so important? The African storytellers को जो है वो गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल पोस्ट जो है वो देती है और उनके सोसाइटी में स्पेशल प्लेस है। आपके मुताबिक जो है वो क्यों जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो लोग? दे आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे प्रिजर्व एंड शेयर द कल्चर। वो इसलिए खास है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रिजर्व फाज करते हैं, शेयर द कल्चर हिस्ट्री एंड विजडम ऑफ द पीपल, और अपने लोगों की जहानत, कल्चर और हिस्ट्री को जो है वो आगे शेयर करते हैं, इस वजह से वो लोग इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, कनेक्टिव, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। Our last one activity is about writing. Rewrite a traditional story from a character's point of view. वी आर गिवन विद अ स्टोरी लिटिल रेड राइडिंग हुड। हमें जो है एक स्टोरी जिसका नाम है लिटिल रेड राइडिंग हुड, इस स्टोरी को जो है वो अपने अल्फाज में जो है बयान करना है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, किसी भी एक कैरेक्टर का जो है वो हिसाब से जो करना है। लाइक मैंने जो इसमें जो एक्सप्लेन किया है अबाउट वुल्फ्स पॉइंट ऑफ व्यू, मीन्स कि मैंने इस तरह स्टोरी बतानी है कि मैं एक वुल्फ हूँ और मैंने जो है वो स्टोरी में जो है क्या जो है वो एक्शन परफॉर्म किया, ठीक है। और वेन एवर वी री राइट स्टोरी इन आवर ओन वर्ड्स वी यूज़ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जब भी हम लोग जो है वो अपने अल्फाज में जो है वो नरेटर के तौर पे बयान करते हैं तो हम लोग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो कि आई, वी एंड मी, माई, इनका इस्तेमाल जो है वो करते हैं। Here is the solution. I'm a wolf. I saw Little Red Riding Hood walking in the forest. I wanted to eat her and her grandma. I went to grandma's house first. I tricked her and took her place in bed. When Little Red came, she looked inside and saw something strange. I tried to catch her, but a kind man came and saved everyone. I was sad and had to run away. कहता मैं एक वुल्फ हूँ और मैंने जो एक रेड राइडिंग हुड को जंगल में चलते देखा और मैं उसे जो है वो उसे और उसकी ग्रांडमा को जो है वो खाना चाहता था। मैं जो है उसकी ग्रांडमा के उसमें सबसे पहले चला गया। मैंने जो है वो आई ट्रिक्ड हर एंड टुक हर प्लेस इन बेड, और उससे जो है वो बिस्तर की तरफ ले गया। जब मैं रेड आई, शी लुक्ड इनसाइड एंड सा समथिंग स्ट्रेंज, उसने कुछ अजीब देखा। आई ट्राई टू कैच हर, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक आदमी आ गया और हर किसी को जो है वो बचा लिया। और आई वाज सैड एंड हैड टू रन अवे, और मुझे जो जाना पड़ा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर second portion of the chapter 2, stories of all time. If you have any question you can ask in the comment box, and moreover don't forget to share, like and subscribe the channel. Thank you, Allah Hafiz.